Am I audible? Hello. Okay, okay. So, how is it going? Course like कहाँ तक complete हुआ front end में? Okay. हम्म. JavaScript में project start कर दिए mini projects. Okay. आज जो classes और inheritance पे बात करने वाले हैं and yeah. Call apply bind. हाँ लास्ट क्लास में हुआ था बट अगर आप कहो तो फिर वो कर सकते हो उसको रिवीजन कर सकते हो उसका. ठीक है. ओके. ठीक है. कर लेते हैं उसको. ओके. मैं एक बार मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ ग्रुप में दैट वी हैव स्टार्टेड फिर स्टार्ट करते हैं. ठीक है. ओके. सो लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट प्रोटोटाइपिंग राइट. सो प्रोटोटाइपिंग की प्रॉपर्टीज देखी हमने. We discuss about whenever we have a constructor function, so there are two things created. So whenever we try to create a function, so there is a function and there is a prototype related to that function. ठीक है. Now when you try to create a object from that constructor function, जिस भी function से आप object बनाते हो, so there is only one copy of prototype right for every constructor function. And the how we can use it for our advantage. सो हमने देखा था कि लेट्स से हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट डेटा मेंबर्स हैं तो सही है राइट. डेटा मेंबर्स हैं, नेम्स हैं. लेट्स से स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नेम रोल नंबर अलग है तो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट इट मेक्स इट. बट लेट्स से देयर इज अ फंक्शन गेट रोल नंबर. सो उसकी कॉपीज क्रिएट हो सेपरेट ऑब्जेक्ट के लिए दैट इज नॉट समथिंग विच इज ऑप्टिमाइज राइट. सो वी टुक द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइप. फिर हमने प्रोटोटाइप की हेल्प ली और हमने देखा कि हम प्रोटोटाइप में मेथड को ऐड कर सकते हैं एंड वहां से यूज कर सकते हैं. वाई इट वॉज वर्किंग, वो क्यों वर्क कर रहा था, क्योंकि जो भी आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न होती है कंस्ट्रक्टर फंक्शन से उसके पास उसके प्रोटोटाइप की रेफरेंस होती है. ठीक है. जिसको हमने डंडर प्रोटो से एक्सेस करा था. तो मोस्टली इसी के अराउंड डिस्कशन था लास्ट सेशन में. ओके. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज हम देखेंगे लाइक वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड अ वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. फिर हम दूसरा वे देखेंगे जस्ट लाइक वी हैव इन जावा. सो जावा में हमारे पास क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के केस में. व्हाट डू वी हैव इन जावा? ओके. सो वी हैव फंक्शंस और क्या होता है हमारे पास? क्लासेस राइट. सो एंड यू यूज द क्लास टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स राइट. सो द सेम थिंग विल बी डूइंग हियर. ठीक है. वो सारी चीजें यहाँ पे भी कर रहे होंगे एंड विल सी हाउ इट इज वर्किंग. ठीक है. अच्छा. So just a quick revision of last session so that we can link between the things. ठीक है. ताकि हम लिंक कर पाए लास्ट सेशन और अभी के सेशन को. So where is it? So oops in JS. So we were here. So we created a student constructor function जिसमें हमने रोल नंबर और नेम पास करा था. रोल नंबर और नेम. ओके. सो व्हाट दिस फंक्शन इज, यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं है, कुछ भी नहीं है. यहाँ पे दिस कीवर्ड है और हमने कहा था कि फंक्शन जब भी फंक्शन की एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनती है तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं. एक तो फंक्शन के ग्लोबल वेरिएबल्स, उसके खुद के जो वेरिएबल्स हैं उसके अंदर राइट. रेफरेंस टू आउटर इन्वायरमेंट दूसरी चीज़ और तीसरा होता है दिस कीवर्ड. सो दिस कीवर्ड तभी एग्जिस्ट कर रहा होता है जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है. तो जब आप ओके. सो ये एक स्टूडेंट है. सो स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर है. इसका काम क्या था? वेन एवर यू ट्राई टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट आप इसकी हेल्प से जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाओ
सो ये सारी प्रॉपर्टीज उसमें अवेलेबल हो और आप ऐसे इस तरह से प्रॉपर्टीज पास कर सकते हैं। ओके, सो इसको हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलते हैं स्पेशली। ओके, है तो नॉर्मल फंक्शन ही, बट हम इसको एक स्पेशल नाम देते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन, बिकॉज अगर मैं इस फंक्शन को लाइन नंबर 35 पे अगर आप देख रहे हो, तो अगर इस फंक्शन को मैं न्यू कीवर्ड से कॉल करता हूँ, सो इट विल बी रिटर्निंग मी अ ऑब्जेक्ट। तो ये मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होता है। ओके, सो इसीलिए हम इसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलते हैं। एंड अगर आप इस सिंटेक्स को ध्यान से देखोगे तो इन जावा वी हैव ऑलरेडी सीन दिस सिंटेक्स, हमने सिंटेक्स ऑलरेडी देखी है कि अगर हम किसी को न्यू कीवर्ड से कॉल करते हैं, सो एंड बेसिकली हम न्यू कीवर्ड के आगे कंस्ट्रक्टर लिखते हैं किसी क्लास का, राइट, एंड वी पास दी वैल्यू। सो वही काम हमने यहाँ पे किया। ओके, एंड ये हर कंस्ट्रक्टर फंक्शन का प्रोटोटाइप क्रिएट होगा और प्रोटोटाइप में हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी हमने देखी। हमने कहा कि अगर गेट रोल नंबर फंक्शन को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, राइट, बिकॉज इट्स अ जनरल फंक्शन, जेनरिक फंक्शन है, तो इसको हम लाइक सेपरेट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कराने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सारे ऑब्जेक्ट्स के पास वो फंक्शन जाए। सो वी एडेड इट टू द प्रोटोटाइप। सो इसको हमने इसके प्रोटोटाइप में ही ऐड कर दिया। नॉट ओनली फंक्शंस, हम इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी स्टोर करा सकते थे, जैसे कि मैक्सिमम मार्क्स। सो मैक्सिमम मार्क्स फॉर ऑल स्टूडेंट इन अ क्लास विल बी सेम, सो वी कैन असाइन इट टू प्रोटोटाइप। सो इसकी कॉपीज भी बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड वी ऑल्सो टॉक कि हम ये रन टाइम पे कर सकते हैं। रन टाइम का मतलब होता है कि आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड हम उसके प्रोटोटाइप में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है उसके बाद भी हम प्रोटोटाइप में चेंजेस कर सकते हैं। और ये सारी फंक्शंस जो हैं ये अवेलेबल होंगे इस लाइन के बाद, राइट, लाइन नंबर 49 के बाद हमें मैक्स मार्क्स भी मिलने लगेगा, भले ही हमारा ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट हो गया हो। तो इस फीचर को हमने बोला था कि वी कैन ऐड प्रॉपर्टीज टू प्रोटोटाइप एट रन टाइम। एनी डाउट टिल हियर? ओके, ओके, वेरी गुड। हाँ, या गो ऑन। क्लोजर्स, ओके, श्योर, ठीक है, क्लोजर्स देखते हैं। सो ओके, सो वन वन मोर डाउट वाज दैट, ओके, first let drop a message. Yeah, I have already dropped a message. Okay, so let's see if someone other joins or it's fine. Okay, so closers revise करते हैं, but we have one more questions before closers. So the question is from Nikhil. What is, like, how is this call, apply and bind is working? Okay, so Tavish, you want to say something about these three functions, call, apply and bind? Okay, 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 no issue. ठीक है, let's see what is call, apply and bind and how it is working exactly. Okay, so if I talk about the functions which I have added here, if you have a closer look, I have added this function to this constructor function, the get roll number function. The job of this function is to print the roll number, right? To print the roll number. That is it. ठीक है, और कुछ नहीं. Now either I do something like this, या तो मैं directly constructor function में function को लिखूं. Okay, first part. Otherwise I go with the prototype. So I add my function to the prototype of my constructor function. ठीक है, so constructor function के prototype में add करूँ. So this is second way. This is second way, right? And as you have in Java, so Java may you have functions, right? So you create an object and you, with the help of that object, you try to call that function, right? Object dot function one, object dot function two, something like this. The same thing goes here, but what if what if what if neither you have assigned the function to prototype and nor you have added the function into the constructor, you have a stand alone function. ठीक है, आपके पास एक separate function है which is not related to the constructor in any way. Neither it is in constructor nor it is in prototype. But if you, so you want that function to be used. Okay, what do I mean by that? Let's say that I want to create a function. Okay, so the name of the function will be get student info. Okay, and I'm not assigning it to the prototype. Okay, this is a normal function which I'm creating
which I am creating, okay, in the global context. As all of you are getting the point, why I'm saying global context, okay, because this is not inside any function, ठीक है, ये किसी function के अंदर नहीं है, किसी block के अंदर नहीं है. So that this means that this is in global context, right? Guys, is this clear? Okay, so anything you write inside just the script, that is in global context. Okay, we'll see that what do like global context and how it helps us. So what why do we say global context and something something? Okay, the point is get student info is a function, and your job is to print the roll number and the name. Okay, so you want to print this dot roll number, this dot name. Okay, so this dot roll number. Okay. Then you say, sir, how is this? How this function will be getting this roll number? Because uh, it is not a function. It is not a function of constructor, not the prototype, right? A function is valid. You can call a function till it is inside the class, right? This is what we have done in Java, right? So we have to write that function inside the class. Okay, and if it is from other class, we have to inherit that class, something like this. But you cannot have a standalone function and you use that with the object. That is not allowed. Okay, so that has to be either inherited from your parent class, या फिर you should be having. ऐसा तो नहीं है कि like any function, any independent function you can use. But JavaScript says कि I will allow you to use any other function. Okay, now this get is student info function via pass params. So let me put params also here. Okay, now here comes why do we have this call, apply, and bind. That is related to this only. Ki how can I use any third party function which is not yet with me? Okay, so um, get student info. Okay, and to I want to I want to call with the object student one. Okay, I want to call this get student info function with the help of student one. Now the clear problem is I cannot do something like this student one dot get student info, because this function does not exist in the object, right? So you cannot do this. So this is not allowed, right? So this is not allowed. Okay. So what is the solution? Then we have something called as dot call. Okay. So we have a function on the function which we call as dot call. Inside the call, we pass the object we pass the object by which we want to call the function. Okay, by which we call the function. Okay, and since we have call, and also what if my get student function has some parameters required. Okay, so I can also supply that. So मैं वो भी supply कर सकता हूँ. तो something like this is done, right? So I have already supplied this part. Okay, so this is one way to call the function. Let's see if it is working or not. So line number 73, right? So let's have a closer look at this line. I'll copy the path. Okay, let's paste it here. Let's go to console. Okay, how to identify this? This is really tricky. So line number 73. Do we have something or not? Or maybe we have to check line number and 68. Okay, so this console log is at line number 68. This roll number we are printing, name we are printing, and params we are printing for student one, right? So let's check this line number 68. So we have line number 68 over here, right? So 21A10. Okay, let's check if this is correct or not. So student one, if I check, so this is present here. Okay, so do we have this also? Window dot, okay, or do we have this get, okay, we'll check this later. So we are getting this 21A10. Okay, so we are getting this function over here. So this is one way. So either we use call, and this params we are getting only one parameter. Obviously we there is only one param, so I have to write param 1 param 2.
So these goes as parameter. Okay, let me write so that I can explain the differences. So let me quickly write this also. Params 1, params 2. Okay, and params 2. Okay, let's go back. Refresh this. Says params is not defined. Obviously, params won't be defined. It should be. Whoa, wait a minute. What happened? Params 1. Okay. Okay, so we are getting both 10 and 20 at this point, right? So we are getting both the parameters over here. Okay, now this is one way using call. Okay, so we have another way. We have other way to do the same thing, which is dot apply. Okay, call is there, apply is there. No difference. What's the difference, guys? Anyone can answer? What's the difference here? Call and apply. Very correct. Very correct. सही बात है. So whatever you are writing in comma, separated by comma, just have an arrow over here. That's it. Nothing else. Okay. So yep. See this line number 68 and 68. Okay. So both are line number 68. Okay. So ये हो गई आपकी call and apply. Okay. Now there is third part to this one. We have something called as, so let um student info function. Okay, a student info function get student info dot bind, not this dot bind. So there's something called as bind, and we just pass it over here. Okay, so what do we supply here? Arguments key array. Okay, so we supply the arguments inside the array. Okay, now let's test it again. The bind. Okay, this is the last one. Okay, we do not see anything. What's the issue? Bind is doing nothing. Why? You can guess also. Okay, any guesses why bind is not working? Okay, okay, so I have to call this. Okay, let's check it now. So we are getting this now. Okay, so what's the difference between call, apply and bind? तो फिर क्या difference हुआ? The difference is call, apply is one time. Okay, this is direct function call. This is not a direct function call. You can call this again and again. Make sense, guys? Okay, so since you have already stored in a variable, so you can call anytime you want. It doesn't matter. Any number of times. Okay. See, two for call, apply and two for this bind. Okay, moving on. So the next doubt was, so is this clear? Call, apply in mind now, Nikhil? Okay. Mm-hmm. Okay. Yes. 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 Obviously. ठीक है. See this. What if I don't bind? ठीक है. What if I don't bind? So let's do not bind this and directly call this function. ठीक है. And obviously pass some parameters so that we don't get error. Okay. And also let's print this here. ठीक है. This comma this dot roll number and other stuffs are there. Okay. Okay. Let's see this. So this depends. This depends on किस पे डिपेंड कर रहा है? The way we are calling the function, right?
So this does not depend where the function is located, उस पे depend नहीं करता. This depends on how we are calling the function. Make sense? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से कर रहे हैं तो फिर वो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगा. लेकिन अभी हमने क्या किया? वी सो इन विच कॉन्टेक्स्ट वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन लाइन नंबर. ओके. सो इन विच कॉन्टेक्स्ट वी आर कॉलिंग दिस लाइन नंबर 80. विच कॉन्टेक्स्ट? सो ग्लोबल फंक्शन कौन सा कॉन्टेक्स्ट है? सही बात है. सो दिस किसको पॉइंट करेगा? वेरी करेक्ट. गाइज, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द पॉइंट. व्हाट इज हैपनिंग? नाउ इफ यू आर कॉलिंग द फंक्शन विद ऑब्जेक्ट, सो ये किसको पॉइंट करेगा? यस, ऑब्वियसली. यस. सो ये फंक्शन कॉन्टेक्स्ट प्रिंट कर रहा है और आपने बिना ऑब्जेक्ट के कॉल किया, सो दिस इज प्रिंटिंग द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, राइट? ओके. सो इफ समवन आस्क्स व्हाट इज दिस in JavaScript, so this depends on how we are calling the function. Okay. So we're gonna have some more detailed discussion on that before we move to classes, because this is very important. Okay. The function this keywords behave differently in JavaScript compared to other languages. Guys, these things like investigation is very very necessary. So please try to investigate things. Okay, so you do not directly understand, or maybe it takes time to understand. So it doesn't. It's always better to like move forward and okay. So learn things. Okay. Now, we'll get one more thing clear today. Binding in arrow functions. Okay, so which was left for 2 3 sessions. Okay, the point is a function does keywords behave differently in JavaScript compared to other languages. It has also some differences between strict and non-strict mode. Okay, so we'll see this strict and non-strict mode. Okay, so I've already done the setup. We'll see that also. So in most cases, the value of this is determined by how a function is called. Make sense? Means runtime binding. Okay, so binding is happening at runtime, so it determines determined by how a function is called. ठीक है, या तो आप ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हो उसको. सो इफ द फंक्शन रिसाइड्स इनसाइड द ऑब्जेक्ट फिर तो कोई बात ही नहीं है. बट इफ द फंक्शन इज आउटसाइड द फंक्शन कॉन्टेक्स्ट, फिर आप उसमें इफ यू आर यूजिंग कॉल अप्लाई बाइंड, देन इट विल गिव द फंक्शन. Otherwise, if you are calling directly in the global context, so this is this is equals to what in global context? This is equals to करेक्ट. ठीक है, सो विंडो में दिस जो है विंडो, सॉरी, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में दिस पॉइंट्स टू विंडो. दिस एंड विंडो द सेम थिंग. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू प्रिंट दिस, सी दिस इज प्रिंटिंग विंडो, सो दिस इज पॉइंटिंग टू विंडो ऑब्जेक्ट. अच्छा, व्हाट्स नेक्स्ट? ES5 इंट्रोड्यूस द बाइंड मेथड विच वी हैव ऑलरेडी सीन. ठीक है, वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया. ES 2015 introduced arrow function which do not provide their own this binding. It retains the this value of enclosing lexical context. Enclosing lexical context means it takes this from its. Very correct. That is what enclosing lexical context is. So if it is in function, it will take this from function. If it is in global context, so फिर window के बराबर होगा. Otherwise it is in any object, so फिर वो object का this ले रहा होगा. Make sense? Okay. um you can do the testing. ठीक है, ये तो मतलब चले. So we are calling this function with the help of object. तो हम्म 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 yes, yes. Okay. um okay, so what basically happens is, it means that there are two levels of nesting, right? What you are saying. Okay, let me write it, then you tell if this is correct or not. Or maybe I already have this closer thing over here.
Okay, so which you were like asking before. Okay, let's see the closer thing then. If we have raised this question, the point is, if I see this function number 2, this function number, yeah, okay, okay, or I can put a function 3 here also if you want. Will that work? It is 3 level nesting, right? Okay, okay. So let's have one more function. So, okay, now what Tabis is asking, like this is one function. We have a parent function and another function, right? So, will the function for access the value of its parent's parent? It means the grandparent or not? Okay, it means that are we able to get this console.log b? Okay, and also let's see a. Okay, so is line number 34 valid or not? This is the question. Okay, so let's copy the path. Okay, okay, let's see this. Too many consoles. How do we know what to? So we can get the line number. So line number is 34. Okay, so 34. Line number and 30. Okay, this where is it? Okay, obviously. What's missing, guys? We have not called the function, right? So we have to call the function first. Okay. So and in order to run this, we have to call the function too. So is the function to called somewhere? Yeah, tell. Hmm. Okay, let's return function 4. So function 2, okay, returns function 4, return function 4. Okay, so where is it? Where's the links? Okay, so now function 1, when calling function 1, will get function 2, and calling function 2 will get function 4 in a return. Okay, so what we can do is a returned function is equals to function 1. Okay, let's do this. This will be, so a returned function will fetch me function 2. So return function is storing function 2. Okay, because this is already called. ठीक है, तो आपको ये रिटर्न वैल्यू में मिल गई, यानी कि रिटर्न फंक्शन कॉल करने पे आप फंक्शन 2 को इनडायरेक्टली कॉल कर रहे हो. ओके, एंड वंस यू आर कॉलिंग रिटर्न फंक्शन 2 इनडायरेक्टली, ठीक है, तो फिर आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है? फंक्शन नंबर 4. एंड इन ऑर्डर टू कॉल फंक्शन नंबर 4 यू हैव टू पुट वन मोर कॉल. मेक सेंस? ओके, let's see. Okay, so line number and 34. So what are we getting here? We are getting 23 and 13. 23 and 13, which is basically A and B. Let's verify that. It's 23, and why it is coming as 23. Okay, because two return functions were called before, क्योंकि दो return function पहले कॉल किए गए थे. एंड इफ यू सी देर आर इंक्रीमेंट्स ओवर हेयर, तो ये 21 जो है 23 में कन्वर्ट हो गया. मीन्स बी हैज बीन converted to 23. Okay, and a is converted to what? So we have a as 13. Okay, so three calls, so that is 13. Okay, first call, second call and the third one call. Okay, so इसीलिए आपको updated values मिल रही हैं यहाँ पर 23 and 13. Make sense, guys? ओके, ठीक है, बिल्कुल देखते हैं इसको. ओके, अच्छा, इन केस ऑफ जावा एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब सबकी बात नहीं कर सकता, आई डोंट नो लाइक अदर वंस, बट इन केस ऑफ जावा व्हाट हैपेंस, यू कॉल अ फंक्शन. आप जब तक फंक्शन कॉल करते हो तभी तक उसकी लोकल वेरिएबल्स क्या होती हैं? आर इन द मेमोरी, एंड एट टिल दैट पॉइंट यू कैन यूज दोज लोकल वेरिएबल्स. एक बार फंक्शन स्टैक से पॉप हो गया तो उसके लोकल वेरिएबल्स भी पॉप हो गए. इज दिस स्टेटमेंट क्लियर? Guys, are you getting the point?
यही होता है ना, लाइक लोकल वेरिएबल, लोकल लोकल वेरिएबल्स का क्या मतलब है, मतलब कि फंक्शन है तो है, नहीं है तो फिर नहीं है, ठीक है। whenever you hit return statement, local variables are gone, right? लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। क्यों? लाइन नंबर 50 सेज दैट कॉल फंक्शन वन, ठीक है। फिर आपने कहा अच्छा ठीक है, फंक्शन वन कॉल करते हैं। तो फंक्शन वन कॉल जब आपने किया तो आपको रिटर्न में मिला फंक्शन नंबर टू। इट मीन्स रिटर्न फंक्शन की वैल्यू है फंक्शन टू। अच्छा, इट मीन्स दैट बी शुड बी पॉप्ड आउट ऑफ स्टैक, क्योंकि फंक्शन वन तो रिटर्न कर चुका है, तो लोकल वेरिएबल भी चले जाने चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए गाइस, ठीक है। यही होना चाहिए ना, जैसे जावा में होता है कि भाई फंक्शन गया तो फिर वेरिएबल्स का क्या काम, बिकॉज ऑलरेडी रिटर्न स्टेटमेंट इज गॉन, ठीक है। लेकिन what java what javascript does is it sees this reference of b is used in nested functions, ठीक है। फंक्शन टू तो इसने रिटर्न कर दिया है, फंक्शन टू अभी भी कॉल नहीं हुआ है, एंड देर इज रेफरेंस ऑफ दिस बी इनसाइड फंक्शन टू। इट मीन्स कि अगर बी पॉप्ड आउट हो जाता तो फंक्शन टू के कॉल पे क्या होना चाहिए था, बी की वैल्यू रेफरेंस एरर, राइट, क्योंकि वो तो पॉप हो गया, तब तो लाइन नंबर 24 में कुछ मिलने नहीं था। Guys, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि इट प्रिजर्व्स द आउटर स्कोप, वो आउटर स्कोप को प्रिजर्व करता है। स्कोप प्रिजर्व करने का मतलब कि वेरिएबल्स प्रिजर्व करता है। ऑब्वियसली स्कोप में और क्या क्या हो सकता है, आपके वेरिएबल्स ही होंगे, मेथड्स होंगे। ओके, सो इसी को क्लोजर बोलते हैं, प्रिजर्विंग स्कोप इज कॉल्ड क्लोजर। तो ये चीजें जावास्क्रिप्ट सेव करके रखता है, ठीक है। इसको पॉप आउट नहीं करता है स्टैक से, ये अभी भी आपके पास रहती हैं। इसीलिए जितनी बार फंक्शन टू कॉल होगा उतनी बार बी की वैल्यू क्या होगी, +1 से इंक्रीमेंट होगी, राइट, क्योंकि बी क्या हो चुका है, सेव। गैस ऑल, हम्म हम्म हम्म, ठीक है। तो फंक्शन टू जब पॉप होगा तो सी पॉप होगा ना, बी थोड़ी पॉप होगा। इसके लोकल वेरिएबल्स पॉप होंगे ना, तो बी तो अभी भी अलाइव है। क्यों अलाइव है? क्योंकि आपने इस फंक्शन टू को किसी फंक्शन के अंदर ही स्टोर कर लिया लाइन नंबर 50 में। तो आप फ्यूचर में फिर से कॉल कर सकते हो इसको। तो जब कॉल करने की टेंडेंसी है, इसका मतलब कि बी के यूज होने की भी टेंडेंसी है। ओके गाइज, एक चीज और, आई आई होप यू गाइज आर नॉट हैविंग डाउट फॉर लाइन नंबर 14। ए क्यों प्रिजर्व हो रहा है अब ये मत पूछना, बिकॉज ए इज इन ग्लोबल स्कोप। जब तक आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा तब तक ये वैल्यू प्रिजर्व होगी। मेक सेंस? ए के लिए तो डाउट नहीं है ना किसी को, ये तो ग्लोबल वेरिएबल है, ये तो जब तक पेज रिफ्रेश नहीं होता तब तक रहेगा। इसमें ओके करा लेते हैं, ABC, ठीक है। ओके, एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको सी प्रिंट कराने से पहले, इसके बाद सी प्रिंट कराते हैं। फंक्शन टू को जो है ना, दो बार, अच्छा दो बार हमने कॉल किया है लाइन नंबर 52 और 54 पे, हमने इसको दो बार कॉल किया है, ठीक है। इसको कर लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। मैं ये भी लगा देता हूँ, एक मार्कर लगा देता हूँ यहाँ पर। बस वही वही देखने जा रहे हैं अभी, वही देखने जा रहे हैं। तो ये है लाइन नंबर 30 पे, ठीक है। 30 पे देखते हैं कि क्या क्या प्रिंट हो रहा है। अगर इफ़ यू सी लाइन नंबर 30, ए इंक्रीज करते गया, बी इंक्रीज करते गया, बट सी इंक्रीज नहीं किया, क्योंकि जितनी बार फंक्शन टू कॉल होगा उतनी बार लाइन नंबर 22 यानी कि सी वेरिएबल री इनिशियलाइज होगा। मेक सेंस?
ठीक है, एक काम करते हैं, इसीलिए सी की वैल्यू 31 आ रही है बार बार। अच्छा, अब इस सी को यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं क्या होगा। एंड ऑल्सो एक और काम करते हैं, इसको दो बार कॉल नहीं करके ना, एक बार ये काम करते हैं, लेट थर्ड फंक्शन, ठीक है, इसको थर्ड फंक्शन में स्टोर करा लेते हैं। ठीक है, तो रिटर्न फंक्शन, इस थर्ड फंक्शन में हमारे पास क्या होगा, फंक्शन नंबर 4 होगा, राइट। ठीक है, और इस थर्ड नंबर फंक्शन को मैं दो बार कॉल कराता हूँ। ठीक है, तो थर्ड फंक्शन को मैं दो बार कॉल कराता हूँ। ओके, सो ये प्रिंट होना चाहिए BAC। ठीक है, और इसके मैं एरोज को ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, सो आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन फॉर 2 टाइम्स। देखते हैं सी मिलेगा कि नहीं इसको। ओके, सी तो इसको मिल रहा है। ठीक है, सी इट इज गेटिंग सी। ठीक है, ओके, अब वैल्यूज अपडेट नहीं हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन में हमने कोई अपडेट नहीं लगाया है, अपडेट नहीं लगाया है यहाँ पे। सी, ओके, एक और चीज, ठीक है, एक और चीज देखते हैं, क्या सी प्लस प्लस अब काम करें यहाँ पे। सी की वैल्यू जो जितनी हो गई थी उससे आगे नहीं बढ़ रही थी, 31 प्रिंट हो रही थी। अब क्या 31 32 33 होगी, लेट्स सी। सब मैंने सी प्लस प्लस कराया फंक्शन नंबर 4 पे। सी 32 33, अब फंक्शन 4 भी प्रिजर्व करने लग गया अपने आउटर स्कोप को। ओके, जितने अपर स्कोप्स हैं सारे प्रिजर्व हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि दोज आर बीइंग कॉल्ड, ऐसा नहीं है कि फंक्शन फंक्शन 4 कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन 2 भी कॉल हो रहा है। नहीं, सिर्फ रेफरेंस शेप्ड है। अगर कॉल होता फंक्शन 4 तो ये दोनों भी चेंज होते, बट ये दोनों चेंज नहीं हो रहे। जो इंक्रीमेंट हमने किया है सिर्फ वही चेंज हो रहा है। और अगर आप फंक्शन रिटर्न नहीं करोगे तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है, मतलब फिर तो आपके पास कोई तरीका ही नहीं है इसको देखने का। फिर तो आप उसको कॉल ही नहीं कर पाओगे ना कभी, अगर आप रिटर्न नहीं करोगे। तो जब आप कॉल, जब वो कॉल्ड इन, कोई तरीका ही नहीं है उसको कॉल करने का, तब तो लॉस्ट रेफरेंस होगा, गार्बेज कलेक्टेड होगा सीधा सीधा। लिंक लिस्ट में क्या होता है, अगर किसी नोड की लिंक आप खो देते हो तो फिर आप उस लिंक लिस्ट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो यही केस है यहाँ पे, अगर फंक्शन रिटर्न नहीं करोगे तो लूज द कॉन्टेक्स्ट एंड दैट्स इट, फिर गार्बेज कलेक्टेड होगा वो। बट प्रॉब्लम तभी हो रही है जब आपने सेव कर लिया उसको कॉल करने के लिए। ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो फीचर है, राइट। गेटिंग द पॉइंट गाइस। ऐस क्लियर हो रहा है क्या, क्लोजर्स। ओके, सो दीज आर वेरी कोर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कोर कॉन्सेप्ट हैं जावास्क्रिप्ट के। रेयरली यू विल बी गेटिंग इन यूजिंग इट इन कोड। ठीक है, it's not that every time you have to do in development, but yes, it's very good to know that these things। क्लोजर क्लियर हुआ सबको, what is closures, preserving a scope, preserving, so what do I mean by preserving a scope, so this is what I mean by preserving a scope। Okay, यस, बट ठीक है, लाइक लेट डू सम डिस्कशन ऑन क्लासेस, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में लेते हैं। ठीक है, वे ऑलरेडी 10 मिनट बचे हुए हैं बस। ठीक है, थोड़े कोर्स भी करने। ओके, सो गाइस, ऑन विच लेक्चर्स यू गाइस आर on currently, like which lectures? Okay, what about Nikhil? Okay, what about Saget? साकेत से पूछा था। साकेत, where are you currently? Yeah, major project, which one? So which so do in JavaScript, so which major project is there? Oh, okay. Okay. Okay, so I hope you guys are completing those mini projects also side by side. Okay, ठीक है।
Okay, let's proceed to classes and then we'll see. So what I was telling, I was on this keyword. Okay, so let's just complete this. Okay, so this depends on how we are calling the function. Okay, a property of an execution context. What is this? A property of execution context, global function or eval that in non-strict mode is always a reference to an object, and strict mode can be any value. Strict mode can be any value. Description, global context. In global context, outside of any function, this refers to global object whether in a strict mode or not. Okay, this is very easy. Global context comes to function context. Inside a function, the value of this depends on how the function is called, which we just saw. Call, apply, and bind, right? So you're calling the function, you're returning this, so you have window. And in Node, we have something called as global list. In Node.js, we'll study Node.js after this. Okay. And what else? So in a strict mode, however, the value of this is not set when entering a execution context, right? So it remains as undefined as shown in the following example. Okay. Function f2 use strict, this C strict mode. So f1 is defined. Tabish, okay, okay. Let me copy this one. So let's create a file for here. Okay. Closer. Okay. I'm saving this. Okay. So let's have a discussion at the next. No, we just have a class day after tomorrow. Okay. Where we were exactly. Now, using a strict mode, uh, the function returns. So this depends on how we are calling the function. So since we directly called with the window, so it is giving undefined. So this only happens when we have a call of this function in direct in the global context. Okay. So yeah. Okay. Well. Okay. See this. You'll get some more idea. So what if I have a function f1 fi? Okay, it doesn't matter. So function f1, function fi. Okay, and what we do is console dot log. Okay, this. Okay, and you call fi over here. Okay, so you're getting this. Okay, but the point is now use strict. Use strict. Okay, use strict. It is printing undefined. Okay, now okay, obviously we have to call the function and check it, not like this. So it is printing undefined. Okay, so with a strict method, this is not pointing to the window. Okay, but you will say, sir, you just said this depends on how we are calling the object. Obviously I just said it. So window dot fi. Okay, see, so what I said. Now, this depends on how we are calling the method. So, if you call the method with object, so this will point to the object in strict mode, obviously, right? A strict mode. In non-strict mode, it's fine. It's forgiving. Non-strict mode means sloppy mode, forgiving mode. JavaScript forgives us, but this depends on how we are calling the function. So, why this function is available in window? Any guesses? Because this function is in global context, so that is why it is available in window. Make sense, guys? आगे, so ये तो ऑलरेडी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही है ना, तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो अवेलेबल होगा ही.
जैसे कि आप लिखते हो लेट ओबीजे इज इक्वल्स टू फंक्शन वन, और उसमें फंक्शन दे देते हो, फिर ओबीजे डॉट फंक्शन वन करते हो, तो उसी तरह से आपने क्या किया, विंडो आपका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट टाइप का है, ऑब्जेक्ट टाइप के नहीं, ऑब्जेक्ट ही है, सो उसके अंदर आपने फंक्शन लिख दी, तो फिर आप उसकी हेल्प से विंडो डॉट फंक्शन कॉल कर सकते हो गया। जो भी वेरिएबल्स आप देते हो उसका एज अ प्रॉपर्टी आप कॉल कर सकते हो। ओके, सो दीज आर सम थिंग्स। ओके, लेट्स मूव टू क्लास। क्लासेस पे चलते हैं। Okay, let's create a file classes in js.html. Okay. Now, okay. So there's something called as classes. Okay, and let's create a student class. So what do we mean by a class? Classes से हमारा क्या मतलब होता है? What do we mean by a class? So class is a collection of, class क्या होते हैं? Collection of होते हैं फंक्शंस एंड डेटा मेंबर्स। ठीक है, फंक्शंस और प्रॉपर्टीज की कलेक्शन होती है विच रिप्रेजेंट्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, किसी रियल वर्ल्ड एंटिटी को डिफाइन कर रही होती है। फॉर एग्जांपल क्लास फ्रिज, सो क्लास फ्रिज मतलब यू आर क्रिएटिंग अ क्लास, अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर अ फ्रिज। ओके, सो फॉर अ फ्रिज, फ्रिज में क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, फ्रिज में क्या, फ्रिज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, फ्रिज का मॉडल नंबर हो सकता है, इट्स मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है, ओके, इट्स प्राइस वुड बी देयर, व्हाट कैन बी द फंक्शंस, इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज टेम्परेचर एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट? सो दीज ऑल आर प्रोग्राम्स। ठीक है, देयर इज अ चिप already inside it. ठीक है, so someone obviously someone has coded it, so something like that would happen. Okay, and all those must kind of machines had Java codes inside them. Okay, so class is student, and since we have class, we also have something called as constructor. Okay, this constructor has, let's say, a roll number and name. Okay, and again you would say something like this: dot roll number is equals to roll number. Okay, this dot name. So classes are introduction of ES6. Okay, these were not, these did not exist before. They are introduced in ES6. Okay, newer version of JavaScript. So constructor is available there for the features. So what is the use of constructor, guys? What is the use of constructor? Okay, like initializing the data members, right? ठीक है, ओके। और ये तो हो गई डेटा मेंबर्स की बात। फिर आप कहोगे सर मेंबर फंक्शंस की भी बात। ठीक है, मेंबर फंक्शंस भी लिख लेते हैं। तो फंक्शन किस तरह का फंक्शन होगा? गेट नेम। ठीक है, एक हो सकता है गेट नेम। ठीक है, और फिर हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और फिर हमने प्रिंट कराया दिस डॉट नेम। ठीक है, मैंने प्रिंट कराया दिस डॉट नेम। ये रेड कलर दे रहा है, क्या मेरे सिंटेक्स में कुछ गड़बड़ है? नहीं, सिंटेक्स इज फाइन। व्हाट इज द इशू? अब सही है? व्हाई इट इज करेक्ट नाउ? अभी क्यों सही आ रहा है?
बिकॉज हम्म मतलब ऑब्वियसली लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब क्यों? ओके ठीक है, सो ये किसको असाइन हो रहे हैं? स्टूडेंट को ये डायरेक्टली असाइन हो रहे हैं, राइट? ठीक है, दिस इज आई आइदर आई राइट दिस और आई राइट द स्टूडेंट डॉट गेट रोल नंबर। ठीक है, वो एक ही बात है। ओके, सो okay, now two three problems are solved. The first problem, we have our constructor. Second problem, हमें इसको प्रोटोटाइप में नहीं देना है। देयर बी नो कॉपीज क्रिएटेड ऑफ फंक्शन। ठीक है, आपके फंक्शन की कॉपीज भी क्रिएट नहीं होंगी, फर्स्ट थिंग। एंड यू डू नॉट हैव टू असाइन इट टू प्रोटोटाइप। दिस विल ऑटोमेटिकली बी डन बाई क्लास। ठीक है, क्लास इसको ऑटोमेटिकली स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट नेम के फंक्शन में इसको कर देगा। डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, एंड वी हैव कंस्ट्रक्टर। एंड हाउ डज अदर थिंग वर्क? हाउ कैन वी यूज द क्लास? यूज कैसे करेंगे, बना तो दिया। द सेम वे वी वर यूजिंग आवर कंस्ट्रक्टर फंक्शन। जैसे आप अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज कर रहे थे, स्टूडेंट वन इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और आपने यहाँ पे रोल नंबर पास कर दिया आगे। ठीक है, लेट इट बी स्ट्रिंग, डजंट मैटर। ठीक है, आपने कुछ नाम पास कर दिया यहाँ पे। ओके, एंड let's create one more of it. Okay, okay, um ठीक है, can I do this? And why is that? सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्लासेस में नहीं होता। If you see this keyword over here, this will automatically create a object if you have new keyword here. This is not a normal function here, but this does not behave as a normal function. Whenever you write new here, it means you are trying to say that create a new object. Make sense? आप क्या गाइड कर रहे होते हो न्यू कीवर्ड से? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन जावा और दिस इज व्हाट हैपेंस इन जावास्क्रिप्ट। दोनों जगह वही काम हो रहा है इस लाइन से। ठीक है, इसलिए आपको न्यू लिखना पड़ेगा। ओके, ओके, आई विल जस्ट कमेंट दिस पार्ट। ठीक है, फिर लेट्स गो टू क्रोम एंड चेक इट आउट। उससे पहले लेट गेट द पाथ नेम। हम्म हम्म हम्म। एक क्लास की बनाई हुई ऑब्जेक्ट को दूसरे क्लास में, लाइक एक क्लास है। हाँ हाँ। हम्म हम्म। ओके, कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, लेट्स सी इफ दैट इज पॉसिबल और नॉट। यस यस, बिल्कुल। ओके, सो एक तो ये क्लास हो गया। लेट्स क्रिएट वन मोर। ठीक है, लेट्स नॉट कॉपी इट, यहीं पे बना सकते हैं। सो क्लास एंड लेट्स से टीचर। ओके, टीचर। ओके, एंड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो टीचर्स के भी रोल नंबर होंगे या फिर आईडी नंबर होगी, कुछ भी होगी। ठीक है, यहाँ पे एंड लेट्स से गेट स्टूडेंट एक फंक्शन है। ठीक है, गेट स्टूडेंट इन्फो। ओके, कोई भी रैंडम फंक्शन है, ठीक है, डजंट मैटर। जस्ट चेकिंग इफ वी कैन यूज दिस ऑब्जेक्ट, वी कैन क्रिएट वन ऑब्जेक्ट इन अनदर क्लास और नॉट। दूसरे क्लास में इसको बना सकते हैं कि नहीं। सो
can I do this? Let student 4 is equals to new student, and we do something like this, and we do something like this. ठीक है? ओके, ये तो हो गया. एंड लेट्स ऑल्सो रिटर्न दिस. इसको रिटर्न कर लेते हैं. ओके, let also return this so that we can check it out if this is successful. So let's create a teacher object so that I can use this function. So let teacher1 is equals to new teacher. Okay, and roll number, let's say 44, and name 40s. Okay, and the teacher one dot having get student info if this is correct. So we will let student 5 equals to this. Okay, let's see. We are getting this. And not confirm console dot log student 5. Okay, let's run this function. It says 4t is not defined, obviously, that is a string, not a variable. Okay, so what Bhavesh asks, he asks like, can we create one more object in another class and use it? So let's see that. So yes, line number 54 is printing roll number and the name. Let's verify it. So line number, okay, we see that. So line number 54 is consoling whatever we are returning from here. Tavis, is it clear? Okay, we use, okay. Okay, so since we already have made this, let's see one more thing. We have some time left. Yeah, 2-3 minutes are there. Okay, the point is, can I? Okay, so do we have inheritance here? That's the question. Do we have inheritance? Let's see that. So, okay, let's teacher extend student class inheritance extends. Okay, so there is extend keyword. It means there is inheritance, right? But how does it work? Student. Okay, so yeah, at line number 54, 52, we're creating a object of teacher. Okay, so this student, it means that it is now having properties of a student. It means that we can do roll. Okay, so let's change this to roll number t and name t so that we do not end up having same property names. Okay, so where is it? Okay. Okay, let's refresh this. So must call super constructor in derived class before accessing this or returning from derived constructor. Just read the error and tell me what's missing in our code. And why is that? Okay. It means that कि हमें super कॉल करना पड़ेगा because we have constructor in our parent function also. So इससे पहले हम अपना constructor कॉल करें, सबसे पहले हमें पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा, तभी तो ये वैलिड होगा ना. इसकी प्रॉपर्टीज आप कब यूज कर सकते हो? जब इसकी कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुकी है, राइट? मेक सेंस? ये समझ में आ रहा है कि ये तो जावा में भी सेम है ना? इफ यू रिमेंबर, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस दिस पार्ट? सुपर. ओके, सुपर कीवर्ड यू हैव टू कॉल इट. ठीक है, जब भी इनहेरिटेंस आप करते हो तो आपको करना पड़ेगा, वहां पे भी और यहाँ पे भी. ओके, लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग नाउ और नॉट. ठीक है, इट्स वर्किंग फाइन. ठीक है, ये तो वर्क कर रहा है, बट इज द प्रॉपर्टीज वर्किंग और नॉट, ये देख लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज भी वर्क कर रही हैं या नहीं. सो डज
this roll number. Okay. Hmm. Okay. Let's try to कॉल द फंक्शन. ठीक है, गेट स्टूडेंट फंक्शन में एक काम ये कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स हैव अ फंक्शन. सो गेट, सिंस आई एम हैविंग दिस, इसका मतलब ये हुआ कि मैं टीचर की ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से गेट नेम को कॉल कर सकता हूँ. राइट गाइस? इनहेरिट करने का यही मतलब होता है ना. तो टीचर वन की हेल्प से मैं गेट रोल नंबर या फिर गेट नेम कॉल कर सकता हूँ. सो लेट्स सी. सो टीचर वन डॉट गेट नेम मैं कॉल कर सकता हूँ. ऑब्वियसली कॉल कर सकता हूँ. कैन आई कॉल गेट रोल नंबर? गेट रोल नंबर, yes, I can. Is it clear, guys? Inheritance, and we also have access to properties also. Properties की भी access होनी पड़ेगी, but already हमारे पास name है. Okay, do we so if we have the name, right? क्या हो कि मुझे अपने पेरेंट क्लास की नेम यूज करनी हो. So super dot. Okay, so what is super dot name? What do you mean by super dot name? ये कब यूज करते हैं? सही बात है. तो जब हमारे पेरेंट क्लास और मेरे खुद के क्लास की वेरिएबल नेम्स सेम होंगी, तब मैं सुपर का यूज़ कर सकता हूँ. मान लो कि अगर स्टूडेंट इन्फो और इसकी स्टूडेंट इन्फो दोनों दोनों फंक्शन है, दोनों ही जगह फंक्शन है, तो फिर किस फंक्शन को, किस, अगर मैं पेरेंट को कॉल करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कॉल करूँगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं, मेरे पास ये गेट नेम फंक्शन है और ये कुछ इस तरह का है, ठीक है, और मैंने टीचर वन डॉट गेट नेम किया, तो कौन सा गेट नेम कॉल होगा? इसके पास भी है, पेरेंट के पास भी है. इट मीन्स टीचर वन डॉट गेट नेम. क्या? तो ये वाली प्रिंट हो गई. ओके, तो बट मुझे कॉल करनी है पेरेंट वाली. सो सुपर डॉट गेट नेम. ये अब देखते हैं. टीचर डॉट गेट नेम करते हैं. टीचर वन डॉट गेट नेम. सी, दोनों ही प्रिंट हो रहे हैं. सुपर का यूज आप कर सकते हो अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए. गैस क्लियर हो रहा है क्या इनहेरिटेंस और क्लासेस? So this is all for today. Okay, revise things. Zip file for code of today. Okay, okay. I will share the drive link. Okay, I will share that. Okay, so before leaving, please mark the attendances where last week. Okay, last week. Oh, okay. Okay, so today is 7, right? So 2022. Okay. Hmm. 2nd June. Okay, thank you. Okay, please mark this one. Okay, guys, please mark your attendance and let's meet next day after tomorrow. Okay, guys, bye.